ब्रेक के बाद जी कंपेनियन में आप सबका दोबारा स्वागत है। अगर आपने अभी भी अपना टेलीविजन सेट ऑन किया है तो मैं आपको बता दूं कि आज ट्यूसडे है, यानी कि शो में हम बात कर रहे हैं इमिग्रेशन के बारे में। तो अगर आपके इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई मसले हैं और आप उसके बारे में थोड़ी सी एडवाइस पाना चाहते हैं हमारे मेहमान से, तो आप बिना किसी संकोच के अपना फ़ोन उठा सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन लाइन्स ओपन है, नंबर्स आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। बस एक ही दरख्वास्त करना चाहूँगी कि अगर आप फ़ोन करना चाहते हैं तो जल्दी से कीजिएगा, क्योंकि हमारे मेहमान हमारे साथ सिर्फ कुछ ही देर के लिए है। और एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप फोन करना चाहते हैं लेकिन नहीं चाहते कि आपका नाम टीवी पे बताया जाए, तो कोई बात नहीं, आप फिर भी हमें फोन कर सकते हैं। हम आपका नाम टीवी पर नहीं बताएंगे, हम आपको एनोनिमस रख देंगे। सो वेलकम टू द सेकंड हाफ ऑफ द शो। थैंक यू। इससे पहले कि मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, ऑलरेडी कॉलर्स रुके हुए हैं आपसे बात करने के लिए, तो लेट्स टॉक टू देम फर्स्ट। थैंक यू। हेलो राज। हाय राज, वेलकम ऑन द शो। क्या पूछना चाहेंगे आप मेरे मेहमान से? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ गुलाम भाई। जी जी जी। मैंने 3 बार एप्लीकेशन कर दिया होम ऑफिस में, तो वो रिजेक्ट कर दिया था। जी जी। और लास्ट ईयर मैंने किया था एप्लीकेशन, तो उसका उसने आंसर रिफ्यूजन नहीं दिया, लेकिन मेरा फीस भी वापस दे दिया और वो मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। जी ठीक है। तो वो हमने वो वापस दे दिया। तो अभी हमने वापस उसको लेटर लिखा है कि हमको पासपोर्ट बनाना है, तो आप हमको आंसर दो, लेकिन 7 मंथ से वो आंसर नहीं दे रहे। और जो आपने एप्लीकेशन तो किया था ये आपने किस बेस पे किया था? ह्यूमन राइट पे। ओके। जो लास्ट टाइम मैं 11 साल से ये कंट्री में हूँ और मेरा 3 साल का लड़का है। ठीक है। जो आपने लास्ट टाइम एप्लीकेशन किया था जिसमें आपने कहा कि उन्होंने फीस भी आपको वापस कर दिया, वो तो उन्होंने रिफ्यूज़ नहीं किया, वो तो इन्होंने इनवैलिड करके रिजेक्ट किया था आपका एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन दैट कि आपने जो है उनको पासपोर्ट नहीं दिया, जिसकी वजह से वो आपको आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि आप कौन हो, वो उन्होंने आपको रिजेक्ट किया। उसके लिए तो आपको इंडियन एम्बेसी से जो है वो पासपोर्ट लेना पड़ेगा, या इंडियन एम्बेसी से राइटिंग में लें कि आपको पासपोर्ट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यू नीड टू गिव देम द रीज़न कि आपके पास अगर पासपोर्ट नहीं है तो क्यों नहीं है, और आपने क्या कोशिश की है इसके लिए कि पासपोर्ट मिलने के लिए लेने के लिए आपने क्या क्या कोशिशें की, जिसके लिए इंडियन एम्बेसी से आपको राइटिंग में लेना पड़ेगा, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इंडियन एम्बेसी आपको राइटिंग में भी नहीं देगी। तो पासपोर्ट के लिए आपको फिर भी आपको वहाँ पे कांटेक्ट करना चाहिए। नंबर 1, जो दोबारा से अभी आपको लिखा है कि आप उनको लेटर दें, होम ऑफिस बाउंड नहीं है आपको लेटर लिखने में। आप उसके लिए तरीका ये होता है कि आप एप्लीकेशन करें, एप्लीकेशन करेंगे, वो आपको एक लेटर लिखेंगे जिसमें वो लिखेंगे कि आप हमें अपना पासपोर्ट दो, आपका एप्लीकेशन वैलिड नहीं है। उस लेटर को लेके आप इंडियन एम्बेसी जाएं, और ओबियसली आपको कुछ इंडियन जो है वो आइडेंटिटी भी चाहिए होगी प्रूव करने के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट या ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको लेके जाने पड़ेंगे साथ में, और उसके ऊपर आप उनको रिक्वेस्ट करें कि आपको जो पासपोर्ट दें, क्योंकि अदरवाइज़ आपका एप्लीकेशन दोबारा से इनवैलिड हो जाएगा। फिर इंडियन एम्बेसी जो है इन सम सर्कमस्टांसिस आफ्टर मेकिंग सम इंक्वायरीज बैक होम, आपकी कंट्री में आपके जो लोकल टाउन है वहाँ पे इंक्वायरीज करने के बाद आपको पासपोर्ट इशू कर देगी। नॉर्मली 1 साल के लिए सिर्फ वो वैलिड होगा, उसको आप दोबारा से होम ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं। इन द मीन वाला आप होम ऑफिस को बता सकते हैं कि इंडियन एम्बेसी ने हमारा एप्लीकेशन रिसीव कर लिया है और थोड़े अरसे में हमें मिल जाएगा, तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है? Alright Raj, I hope that helped you. Thank you so much for calling us today. Thank you. अब हमारे अगले कॉलर है हरविंदर। हेलो। हेलो। हाँ जी जी कंपेनियन में आपका स्वागत है। क्या पूछना चाहेंगे आप मेरे मेहमान से? हाँ जी, वाइट लाइक ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਰਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸੈਲਫ ਏਮਪਲੋਇਡ ਵੀ ਹੈ, ਪੇ ਸਲਿਪ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾਲ, ਐਡਰੈਸ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਟੈਕਸ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ? देखो, अपील ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਅਪੀਲ ਦਾ, ਪਰ ਅਪੀਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਡੇਢ ਲਵਾ ਦੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਸਲਿੱਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਲਾਤੀਆਂ? ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੇ ਸਲਿੱਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੇ ਸਲਿੱਪਾਂ ਤੇ ਪੇ ਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਡ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੇ ਸਲਿੱਪਾਂ ਵੀ ਲਾਓ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲਾਓ, ਤੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦਾ ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਲਾਓ, ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਗਾਓ,
ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਇਨਵੋਇਸਿਸ ਐਟਸੈਟਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਣ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। अपील ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮगर टाइम बहुत लगेगा, ठीक है? Alright Harvinder, I hope that helped you. Thank you so much for calling us today. Thank you. अब हमारे अगले कॉलर अनोनिमस रहना चाहते हैं। हेलो हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, वेलकम ऑन जी कंपेनियन। क्या पूछना चाहेंगी आप मेरे मेहमान से? हेलो सर। हाय सर मैं यहाँ पे 2006 मार्च में आई थी स्टूडेंट वीजा पे। जी जी। और मेरे को 10 साल होने में 6 महीना वीजा शॉर्ट था। 10 साल होने में सॉरी 10 साल होने के लिए 6 महीना वीजा शॉर्ट था। अच्छा। लेकिन कॉलेज से मुझे काम करने का अलाउ नहीं था, लेकिन जब कॉलेज में हॉलीडे था मैंने 1 महीने ही काम किया, लेकिन कॉलेज ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो फिर मैं लॉयर के पास गई तो उसने कंटिन्यू स्टडी करने के लिए होम ऑफिस को एप्लीकेशन डाले, लेकिन उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। जी जी। और फिर दोबारा उन लोगों ने ह्यूमन राइट का कर दिया था, वो भी उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और मुझे अपील की राइट मिली थी। जी जी। तो मेरा हियरिंग इस जुलाई को है। जी जी। अभी मैं यहाँ 11 साल हो गई हूँ और मैंने लाइफ इन यूके इंग्लिश टेस्ट पास कर चुकी हूँ। बिल्कुल। अब सर मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं 11 साल हो गई हूँ। मैं फ्रेश एप्लीकेशन डालूँ या मैं हियरिंग पे जाऊँ? देखिए आप दोनों ऑप्शन कर सकती हैं, पर अगर देखें अगर आपके 10 साल पूरे लीगल थे और उसमें कहीं पे भी गैप नहीं था, फिर तो आपके पास काफ़ी चांसेस हैं कि आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जानी चाहिए। उसके लिए आप जो है ग्राउंड्स वेरी कर सकती हैं अपील के अंदर, और जिस दिन आपकी कोर्ट में हियरिंग हो उस दिन आप जो है अपने जो आपके लॉयर हैं उनसे रब्ता करें, उनसे पूछें और वो बैरिस्टर को इंस्ट्रक्ट करें कि आपकी ग्राउंड्स वेरी करके आपका लाइफ इन द यूके और B1 जो इंग्लिश टेस्ट है इस वक्त वो दे के कोर्ट को जज को बताएं, और होम ऑफिस के वकील से भी बात कर लें हियरिंग से पहले ही उस दिन कि देखें हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स आप मीट करती हो तो हमें इंडेफिनिट लीव जो है मिलनी चाहिए। तो जज जो है वो केस आपका दोबारा से, जज के पास पावर नहीं आपको इंडेफिनिट देने की, जज दोबारा से आपका केस जो है होम ऑफिस में रिकंसिडरेशन के लिए भेज देगा। वेरी लाइकली होम ऑफिस जो है आपको बायोमेट्रिक कार्ड इशू कर देगा इंडेफिनिट लीव का। इस तरह आपको इंडेफिनिट लीव के पैसे भी बच जाएंगे एप्लीकेशन करने के। दूसरा ऑप्शन आपके पास हमेशा से आप एप्लीकेशन विदड्रॉ करके अपील विदड्रॉ करके आप स्ट्रेट वे एप्लीकेशन कर दें तो वो भी ग्रांट हो सकती है। आप प्रीमियम सर्विस पे भी जा सकती हैं, एप्लीकेशन अपील विदड्रॉ करके प्रीमियम सर्विस बुक करें और प्रीमियम सर्विस के अंदर जो है वो जाके आप अपना एप्लीकेशन वेरी कर सकते हैं, तो वो भी हो सकता है। आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं और आप इन बाय द एंड आपको इंडेफिनिट मिल जाना चाहिए। All right, I hope that helped you. Thank you so much for calling us today. Thank you. So I have another email query. My name is Uttam. I'm a UK passport holder and recently came back from Dubai to UK. I was for 4 years outside UK and I got my passport, but now I'm married and want to get my wife as a dependent. Please suggest what to do and how to get my wife here. My wife is an English degree holder from the Delhi University as a honours. So does she need to give IELTS or does she not need to give that test? Please suggest, can she visit the UK for now or will that affect the application for a dependent which she would like to make after 6 months? Number one, it won't affect her if she makes the application to come here as a visitor, and later on she wants to come here as a dependent of you. It won't affect. So she can. So that's not a problem as long as she declares the circumstances. She declares that you are here. Number two, because she got a degree from India, which was taught in English, but as the India is now majority speaking English country, so you need to have a NARIC certificate, which will clarify that the degree which she obtained from India is actually equivalent to B1 or a bachelor degree in the UK. In that case, she is exempted. Normally what I recommend people that do the English test in India, which is only 10,000 or 15,000 rupees, it's the easiest way to do it rather than involving NARIC, writing to NARIC, providing all the information to NARIC, and NARIC take 40 days to come back to you and they charge about 60-70 pound as well. Without going all the hassle, it's best if you do that from India and then just submit it with the application, and then hopefully she should be granted the leave. All right, I hope that helps you. Thank you so much for sending us an email, Uttam. Thank you. अब हमारे अगले कॉलर अनोनिमस रहना चाहते हैं। हेलो हेलो, हाय, वेलकम ऑन जी कंपेनियन। क्या पूछना चाहेंगे आप मेरे मेहमान से?
मैम मैं आपके मेमना से ये क्वेश्चन पूछूंगा कि मैं लास्ट 4 ईयर से मैं यूके में रह रहा हूँ, जी तो अभी तक मेरा यूनिवर्सिटी ने मुझे एप्लीकेशन भेजा था कि आप और फर्दर यूनिवर्सिटी अब नहीं आ सकते हो तो आप रीअप्लाई कर सकते हो। जी आप रिपीट करेंगे, आपने क्या कहा अभी? मैं ये कह रहा हूँ कि लास्ट ईयर से मैं यूनिवर्सिटी नहीं गया हूँ, लास्ट 4 ईयर से। यूनिवर्सिटी नहीं गए आप? जी जी जी, तो उन लोगों ने मेरे घर पे लेटर इशू किया था कि आप दोबारा वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अभी मेरे पास क्या राइट है कि मैं कौन सी आप किस वीजा के ऊपर आए थे? आप स्टूडेंट वीजा के ऊपर यूके में आए थे? जी मैं स्टूडेंट, जी 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 स्टूडेंट। मेरे भाई, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आए थे और आपने 4 साल से यूनिवर्सिटी नहीं गए और आप 4 साल से ओबियसली आपका वीज़ा तो ख़त्म हो गया था, रिवोक हो गया था, या कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने ख़त्म कर दिया, तो अभी आप फर्दर फ्रेश एप्लीकेशन अगर स्टूडेंट का करते हैं तो वेरी लाइकली वो तो रिफ्यूज़ करेंगे आपका। देखिए वो जो लेटर भेजते हैं उसके अंदर 2-3 ऑप्शन होते हैं कि आप या तो यूके छोड़ दें या फिर आप फर्दर, अगर आपके पास कोई रीज़न है तो उसके ऊपर आप एप्लीकेशन करें। उसका ये मतलब नहीं होता कि आपको वो कह रहे हैं कि आप एप्लीकेशन करें, हम आपके लगाने के लिए बैठे हुए हैं। वेरी लाइकली आपने, क्योंकि आप तो ओवरस्टे और आप इलीगल हो चुके हो, आपकी स्टूडेंट की एप्लीकेशन जो है वो एंटरटेन नहीं की जाएगी, वो सक्सेसफुल नहीं होगी। अच्छा जी, All right. ठीक है। I hope that helped you. Thank you so much for calling us today. Thank you. अब हमारे अगले कॉलर एनोनिमस रहना चाहते हैं। हेलो। Hi there. Hi, welcome on I'd the like companion. Hi, thank you for having me. I'd like to ask a question. I've been involved with a partner for nearly enough 2 years. We've been living together. Okay. I'm a UK resident, UK citizen. And he came into this country when he was a minor. And then Okay. he obviously defaulted and didn't keep in touch with the Home Office. He Okay. made a claim, I think, around about 2 years ago, which was declined. And then since then, he's just gone, he didn't bother going and reporting back to them, signing on. But we've been together now for, like I said, almost 2 years. We're married religiously. I'm just wondering what sort of application would we put in? Well, as your partner is absconder as well as he's an illegal person in the UK, the application, the only option application that you can make will be a human rights application based on family and private life. If he is to be granted the leave to remain, that will be on a 10-year route. He will be granted a 30-month leave to remain. But if you do not have any kids, or you don't have any strong reason for him to stay here other than just being in a relationship with you, then normally they tend to refuse the application with the right of appeal, and in that case you have to go to the court to explain why he cannot go back to his country and then make the application to join you in the UK. If you do have, obviously, if you have started a family and you have kids and everything, then you can put that with the application to support the application, to say, like, you know, he should not be asked to leave the UK and then come back, because that will affect your family or your children. In that case, the Home Office normally grants the leave to remain without even refusing the application, but they will be making some inquiries to you, asking for so many documentation. So it's best, it's not an easy matter. It's best if you consult any good solicitor to advise you and also assist you on the application. All right, I hope that helped you. Thank you so much for calling us today. Thank you. अब मेरे साथ फोन पर मौजूद है ज्योति। हेलो ज्योति। Hello, how are you, ma'am? I'm good, ज्योति. How are you doing? Yeah, I'm fine. मैं ना इनसे आपके स्टूडियो में जो गेस्ट आए मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जी। वो एक्चुअली ना मेरी सिस्टर इंडिया से स्टूडेंट बेस पे आई थी, उसको 6 ईयर हो गए इधर आए हुए। जी। उन्होंने अपने चाइल्ड का, उनका 5 ईयर का चाइल्ड है, उन्होंने इंडियन पासपोर्ट बनवा लिया था, वो यहाँ का बॉर्न है। वो आगे 7 ईयर में केस लगा सकते हैं अपने चाइल्ड के बेस पे? बिल्कुल, अगर उनका चाइल्ड यहाँ पे 7 ईयर से हो और वो यूके में बोर्न हुआ है तो बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर चाइल्ड यूके में बोर्न ना भी हुआ हो तो 7 ईयर्स जो चाइल्ड यूके में रह चुका है उसकी बेस के ऊपर भी एप्लीकेशन लग सकता है, और बिल्कुल लग सकता है। एज आई सेड टू द अर्लियर कॉलर कि ये कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप लगाएंगे एप्लीकेशन और ग्रांट हो जाएगा। इसमें होम ऑफिस सारा केस जो है डिस्कशन के ऊपर, और होम ऑफिस पूरा केस देखता है कि आपके क्या क्या अदर रीजंस हैं जिसकी वजह से बच्चे को और उसके पेरेंट्स को यूके में रहना चाहिए, मगर आप बिल्कुल एप्लीकेशन लगा सकती हैं। ये क्योंकि उसका इंडियन पासपोर्ट है ना, इसीलिए इससे मैटर नहीं करता। अगर जाहिर है उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट होगा फिर तो वो एप्लीकेशन करेंगे ही नहीं। इंडियन होगा या कोई और पासपोर्ट तो होगा उनके पास, तो ये पासपोर्ट होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। All right, Jyoti, I hope that helped you. Thank you so much for calling us today. Thank you. अब मेरे अगले कॉलर एनोनिमस रहना चाहते हैं। हेलो।
Hello, yes. Hi, how are you? Hi, I've got a question. Yes, go ahead. I'm a citizen here, and both of my parents are over 65, and they're in Pakistan. I support them from here. I was wondering if I can actually apply for their visa to come over here, settlement visa. You can apply for settlement visa for them to come and join you in the UK, but you need to give them reasons why you want them to come and live in the UK. If you say you are the main carer and main sponsor, financial sponsor, then they can ask you like why the sponsorship cannot be continued while they are still in Pakistan, and then you send them regular money and get somebody to look after them. Or maybe you're the brother and sisters are still living in Pakistan, or the siblings still living in Pakistan. If that's the case, normally they tend to refuse these applications. The application is very expensive. Like for one parent, it's about 2,600 something, £76, I believe. So for both applications, you will be paying around £5,500. So you got to be very careful. I rather advise you that you should consult a solicitor, ask the solicitor, and explain all the circumstances and reasons why you want them to come here, and what are the reasons they cannot continue to live in their country, Pakistan or India, whichever country they're from, and what are the main reasons, and what arrangements you have in the UK for their care, and what guarantees you have and sureties you have that they will not be claiming any benefits. You need to support your application with all the evidence, and if you do, then very likely the application will be granted, or at least from the court it will be granted. All right, I hope that helped you. Thank you so much for calling us today. Thank you. So I have another email query for you. हमने EU के अंडर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया था. उसका जवाब आया है कि हमने ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं भेजा, इसलिए उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया. हमको अब नई एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी या उसी पर हम पासपोर्ट भेज दें? हम जर्मनी से आए हैं. दिस इज फ्रॉम गुरमीत सिंह. बिल्कुल, गुरमीत सिंह जी, जो आपने एप्लीकेशन किया, आपने पासपोर्ट उनको नहीं लगाया, आपका एप्लीकेशन प्रॉपर्ली ट्रीट ही नहीं किया गया. आपको एप्लीकेशन जो है उन्होंने रिफ्यूज़ करके या रिजेक्ट करके वापस भेज दिया, क्योंकि आपने आइडेंटिटी प्रूव नहीं की थी. आईडी जो लगाए थे यूरोप का, वो नहीं आपने लगाया था. अभी आपके पास ऑप्शन दूसरा यही है कि दोबारा से वो £65 उनकी होम ऑफिस की फ़ीस पे करें. अगर आपके डिपेंडेंट भी हैं तो उनकी भी हर एक की £65 फ़ी है, और दोबारा से एप्लीकेशन करें, ना कि सिर्फ पासपोर्ट भेजें. क्योंकि वो एप्लीकेशन जो आपने किया था वो उन्होंने रिफ्यूज़ करके या रिजेक्ट करके आपको वापस भेज दिया. सो अभी आपको नया एप्लीकेशन लगाना चाहिए. All right, I hope this helps you. Thank you so much for sending us an email. Thank you. So I have another email query for you from Mr. Khalid Khan. My father is 70 years old and my mother is below 65. I'm a citizen here. Can I apply for their settlement? It's very similar to the previous one. I'm Pakistani and they're depending on me. I send them money regularly every month to take care of them. Well, just because, if he's saying in nutshell, yes, there is an option for him to call their parents and for them to live here in the UK, and considering one of the parents is over 65, yes, but it's a big but. There are other reasons. If he's just relying on the financial support, that he's sending regular money to Pakistan and supporting his parents financially, and financially they rely on him, that's not enough reason. He needs to have other financial as well as emotional reasons, and he needs to obviously explain to them why they cannot continue to live in their country. And if, as I said to the other caller, if he's got other brother and sister, uncle and aunt, and and his parents have lived all of their life in Pakistan, then it's very unlikely that they will just grant the application, because it's a settlement application. It's a very complicated matter. He should consult someone before making the application, otherwise you risk losing money. Right. So I have another email query. Mr. Khan, thank you so much for sending us that email query. I hope this helped you. Thank you. So I'm applying for a British passport. I already got my indefinite leave to remain since 2011. Can I ask which criteria I need to apply for my British citizenship? I already got ESOL certificate. And please could you tell me what other requirements do I need? This email is from Jackie. Look, Jackie, if you've got indefinite leave to remain, and then for any other reason other than marrying to a British citizen, then you need to wait for 12 months.
since the grant of the indefinite leave to remain. On top, you need to do life in the UK. And ESOL you can only submit if the ESOL was submitted as part of your indefinite leave application. Otherwise, you need to do the new tests, which are B1 or IELTS. These are the two tests from one of them is Trinity College London. The other one is from British Council IELTS awarding body. These are the main requirements. Other than that, you can obviously tell them, like if you're working, you can provide them your bank statement, pay slip, etc. If you're unemployed, you can explain them. If you're on job seeker allowance, you can also explain to them. There is no financial or other requirements which you need to. The other main reason or the requirement is the residence requirement. You should not be out of the UK in the last 5 years for more than 480 days, and in the last 12 months not more than 90 days. These are the basic requirements. As long as you can meet them, £1,236 is the application fee. Okay. Application normally is granted in 4 months' time. Okay. All right, Jackie, I hope that helped you. Thank you so much for sending us an email. Thank you. So, Mr. Mustafa, we are absolutely out of time, but thank you so much for being with us today. As usual, it was an absolute pleasure. Thank you so much for having me. आई होप आप सब ने हमारा आज का शो एंजॉय किया होगा. जाने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई भी कदम उठाने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले ऑलवेज सीक इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस, क्योंकि मेरे मेहमान को सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन पता है जितनी आपने उन्हें फ़ोन पे बताई है. इसीलिए हमेशा सीक इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस. तो चलिए, आज का शो खत्म हो रहा है, लेकिन कल जी कंपेनियन पर हम दोबारा लौटने वाले एक नए टॉपिक के साथ. तो कल का एपिसोड बिल्कुल मिस मत कीजिएगा. मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी. तब तक के लिए गुड नाइट एवरीवन एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स.